Today, our topic is gastrulation and the formation of three germ layers and what these three layers are going to be to develop. You see that gastrulation means जो हमारे पास ब्लास्टुला था, a mass of cells, ये जो ब्लास्टुला है, blastula means mass of cells have known as blastomers. By mechanism of compaction, large cells will remain in the center and small cells on the periphery. This blastula gets implanted into the endometrium of female. The formation of blastula changes into gastrula is known as gastrulation. Blastula changes into gastrula known as gastrulation. And what is gastrula or gastrulation? That this gastrula will develop germ layers. Formation of germ layers from the gastrula, or we can say gastrulation is formation of germ layers. Germ layers include ectoderm, mesoderm and endoderm. Here we should remember that ये जो हमारे पास गैस्ट्रुला है, हमारे पास एनिमल्स जो है, they are Diplobalstic and Triploblastic. Diploblastic animals के पास only two layers होते हैं, ectoderm and endoderm. It includes protozoa, porifera, coelenterata, जिनके पास खाली दो लेयर्स होते हैं. Triploblastic के पास all the three layers. It includes all the animals like Annelida, arthropoda, mollusca, echinodermata, fishes, amphibia, reptile, bird, mammal, etc. When ये जो ब्लास्टुला बना था, इम्प्लांटेशन हुई थी, इम्प्लांटेशन के वक्त ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म इम्प्लांटेशन के वक्त ये खत्म हो जाती है और ये जो सेल्स है ये डिजेनरेट होते हैं. इन सेल्स को हम कहते हैं रॉबर सेल्स. Robber cells are the cells which are in connection with the endometrium of mother. Robber cells degenerate हो जाएंगे और यहाँ पर डेवलप होंगे विलाई known as chorionic villi. These chorionic villi help in adjustment, or we can say implantation, and they also help to absorb the nutrition. They also help करेंगे एक तो एडजस्ट होने में, इम्प्लांट होने में, दूसरा they will absorb the nutrition from the mother's endometrium, or we can say fetal or this fetal. Now, this is the chorionic villi. These chorionic villi are important. Now, these cells, it is known as embryonal knob. What is embryonal knob? That means group mass of cells. Mass of cells known as embryonal knob. ये जो embryonal knob है, it is towards the endometrium of mother. If this is endometrium, ये knob है, इसी की ओर जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ से फूड प्रोवाइड होगा. जब फूड प्रोवाइड होगा तो ये जो सेल्स है, they will increase in number, increase in mass.
they will increase in mass, increase in number and increase in size. जब ये सब कुछ होगा तो इस हिस्से को ये दो टाइप्स ऑफ, ये एम्ब्रियोनल नॉब जो है ये दो टाइप्स ऑफ सेल्स बनाएगा। जो फूड आएगा पहली लेयर जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी, एंड ये वो लेयर है, ये these will become columnar, long columnar cells। ऊपर वाली लेयर जिसको हम कहेंगे एपिब्लास्ट, और दूसरी लेयर है जो नीचे है जिनको हम कहेंगे क्यूबॉइडल सेल्स, जिसको नोन दैट इज नोन एज हाइपोब्लास्ट। कॉलमनर, अपर कॉलमनर सेल्स एपिब्लास्ट, लोअर क्यूबॉइडल सेल्स हाइपोब्लास्ट। दो लेयर्स ऑफ सेल्स बन गए जिनको हम यहां पर देख सकते हैं, यहां पर। नाउ इसके बाद क्या होगा, दूसरी स्ट्रक्चर, ये हमारे पास एपिब्लास्ट है, ये हमारे पास बाहर वाला ट्रोफोएक्टोडर्म, ये अंदर ब्लास्टोसील जो कैविटी है। नाउ दीज सेल्स दे हैव फॉर्म्ड टू लेयर्स। अब ये जो टू लेयर्स है, जो ऊपर वाली लेयर है ये क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी, ये लेयर जो ऊपर वाली डिवाइड करेगी तो ये बनाएगी इस तरह एक लेयर। पहली वाली लेयर, ये है पहली वाली लेयर जो यहां पर बनी है, जिसको हम कहेंगे एंडोडर्म। एंडोडर्म is the first formed layer during fetus formation। इसके बाद यहां पर जो इस एंड को हम कहेंगे क्यूबॉइडल एंड, इस एंड को इसको कहते हैं सिफेलिक एंड। सिफेलिक एंड की साइड से डिवाइड करेगा मास ऑफ सेल्स और बनाएगा एक लेयर, उस लेयर को हम कहेंगे एंडोडर्म। दूसरा, फिर से डिवाइड करेंगे यही सेल्स, यहां से डिवाइड करेंगे यहां से, और एंडोडर्म के बाद जो लेयर बनेगी दैट इज नोन एज एक्टोडर्म। दिस इज एक्टोडर्म, ये बनी है लेयर दूसरी, ये है एक्टोडर्म। और अब कितने हो गए, दो लेयर्स, एक पहली बनी एंडोडर्म, दूसरी बनी एक्टोडर्म। सेकंड, इसके बाद बीच वाले से फिर से ये सेल्स डिवाइड करेंगे और बनाएंगे और एक लेयर जिसको हम कहेंगे मेसोडर्म। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ थ्री लेयर्स। अब कितने लेयर्स बने, तीन लेयर्स। कहां से, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में। एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में क्या होगा, जो सिफेलिक एंड और कॉर्डल एंड है, सिफेलिक एंड से सेल्स डिवाइड करेंगी। सबसे पहली लेयर जो बनेगी उसको हम कहेंगे एंडोडर्म, फर्स्ट लेयर, जर्म लेयर। उसके बाद बाहर वाली लेयर फिर से बनेगी वो एक्टोडर्म, फिर से और एक मेसोडर्म। ठीक है, दिस formation of three layers, formation of three layers is known as gastrulation। इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ थ्री लेयर्स इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि हमारे पास कुछ एनिमल्स, प्रोटोजोआ, पार्ट्रस, सिलेंट्रेटा, जिनके पास दो ही लेयर्स है, एपिडर्म एंड एंडोडर्म, ectoderm and endoderm, whereas higher animals or invertebrates also they have all the three layers। now this ये जो अब स्ट्रक्चर एक बना हमारे पास, जिसके बीच में ब्लास्टोसील कैविटी है, थ्री जर्म लेयर्स है, ठीक है, और बाहर से ये अब खत्म होने वाला है बाहर वाली लेयर। अच्छा, ये जो ब्लास्टोस, ये जो कैविटी है इसमें क्या होगा, इट कंटेन्स न्यूट्रिशन, इट कंटेन्स न्यूट्रिटिव फ्लूइड। नाउ अगर ये तीन जर्म लेयर्स बने हैं, these three germ layers, ectoderm, endoderm, and mesoderm, they will form the they will form different organs of the body। कैसे मैं बताऊंगा, ये हमारे पास एंडोडर्म, एंडोडर्म जो है ये बनाएगा और गट और कॉलम, एक्सेप्ट फोरगट, फोरगट के बगैर मिडल एयर बनाएगा। ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन,
tongue, urinary bladder, pancreas, liver, respiratory tract, thyroid, thyroid gland, and anterior pituitary. These are the parts which are formed by endoderm. Now, mesoderm. Mesoderm will form muscles, connective tissue, muscles, connective tissue, dermis, bones, excretory system, adrenal cortex, and reproductive system. Now we have ectoderm. एक्टोडर्म क्या बनाएगी? फोरगट एंड हाइंडगट, क्योंकि जो बीच वाला हिस्सा है फोरगट और हाइंडगट बनाएगी ये, लेकिन एक्टोडर्म, लेकिन जो बाकी है गट वो बनाएगा एंडोडर्म। एपिडर्मिस, एक्टोडर्म, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन्स, इंटरनल ईयर एंड रेटिना, nasal chambers, middle and posterior pituitary, and adrenal gland. This is known as fat of germ layers, जिसको हम fat maples भी कहते हैं. That in gastrulation, three germ layers are formed after implantation: ectoderm, endoderm, and mesoderm, known as gastrulation. Structure is known as gastrula, and these endoderm, mesoderm, and ectoderm, they will form different organs of our body. Our topic is placenta. Placenta is the connection between mother and fetus, or we can say जो पार्ट फीटस को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, अटैच करता है with the endometrium of mother, with the fetal member, with this endometrium, this that is known as placenta. Placenta is the connection between mother and fetus. It is a mechanical organ because it helps us in attachment. It gives protection. It is a physiological organ because it provides nutrition. It provides immunity. It produces many hormones like HCG, progesterone, placental lactogen, etc. Even it is a barrier. Uh, Many viruses, bacteria, microorganisms cannot pass through this placenta, so it becomes a barrier. ये जो placenta है, it is made up of two important parts. एक जो फीटस के बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कोरियन कहते हैं, दैट एक तो ये कोरियन से बना है, दूसरा जो मदर का एंडोमेट्रियम है उससे भी बना, जिसको हम डेसिडुआ कहते हैं. दैट मीन्स प्लेसेंटा इज इट हैज टू पार्ट्स. वन जो फीटस का कोरियन है और मदर का डेसिडुआ, दो चीजें बनाते हैं प्लेसेंटा को. प्लेसेंटा इज अराउंड 500 grams in weight, आधा kg. It forms a long cord. It forms a long cord known as umbilical cord. This umbilical cord is 12 to 14 inches long. Placenta, it provides nourishment from the mother membranes of the mother to the fetus. It acts as a respiratory organ because the gaseous exchange in the fetus occurs through this placenta. Many hormones are produced by this placenta. For example, एक हार्मोन है हमारे पास, that is progesterone. Progesterone maintains endometrium, it maintains pregnancy. और पहले प्रोजेस्ट्रॉन निकलता था कॉर्पस ल्यूटियम से बिफोर फर्टिलाइजेशन.
या विद आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फॉर 1 to 3 days। लेकिन फिर वो खत्म हो जाता है, कॉर्पस ल्यूडियम बन जाता है, कॉर्पस एल्बिकम, कॉर्पस हेमोरेज। और उसके बाद ये प्लेसेंटा देता है प्रोजेस्टेरॉन, जो 9 months तक मदर्स ब्लड में रहता है। HCG human chorionic gonadotrophin, most important this hormone, because this hormone is the first indication, complete indication, pure indication that a female is pregnant. And this hormone is also produced by placenta. Third is lactogen, और जिसको हम कहते हैं placental lactogen। ये placental lactogen क्या करता है? It placental lactogen, it stimulates mammary glands to produce milk, to form milk, to prepare for the milking. It acts as a barrier. Many drugs cannot pass through this placenta, but few can pass. जो पास होते हैं, फॉर एग्जाम्पल निकोकीन, हम जो सिगरेट पीते हैं, फादर या कोई और पीते पीते हैं, मदर के पास पहुंचता है थ्रू एयर इनहेलेशन के जरिए। दैट कोकीन, दैट निकोटीन, दैट निकोटीन पास हो जाता है थ्रू प्लेसेंटा। HIV वायरस, इट कैन आल्सो पास थ्रू प्लेसेंटा। जो पास होते हैं थ्रू प्लेसेंटा उनको हम टेरेटोजेनस कहते हैं। नेक्स्ट, इट रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, फ्रॉम द ब्लड ऑफ fetus। And we have different types of antibodies which provide protection, like IgA, IgM, IgG, IgE, Ig, etc. But IgG immune antibody is the only antibody, IgG is the only antibody which provides immunity, passes through placenta, from mother's blood through placenta to fetus. These were the functions of placenta. Now, अगर आप, ये हमारे पास फीटस है, ये हमारे पास कोरियानिक विलय है, यहां से फूड एब्जॉर्ब होता है, ये तो हमने देखा है पहले क्लास में। ये जो प्लेसेंटा है, इट हैज 3 पार्ट्स। एक यहां से पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं डेसिडुआ पैराइटैलिस। इस हिस्से को कहते हैं डेसिडुआ पैराइटैलिस। दूसरा पार्ट जो यहां से एंडोमेट्रियम के साइड से है, फीटस एम्ब्रियो, यहां कोरियानिक विलय है, इस हिस्से को, इसको कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। इस हिस्से को कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। These are the 3 parts: Decidua basalis, Decidua parietalis, and Decidua capsularis. Now, 3 parts: Decidua parietalis, Decidua capsularis जो ऊपर से कवर करेगा, Decidua capsularis जो इन साइड्स में, Decidua parietalis, और जो नीचे से है Decidua basalis। हो गए 3 पार्ट्स। नाउ, जो ह्यूमन प्लेसेंटा है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कैरेक्टर्स है, पिक्यूलरिटीज है। एक, ह्यूमन प्लेसेंटा इज मेटाडिस्क्वाइडल। Metadiscoidal means it is completely covered by endometrium. It is completely covered by endometrium. It is known as metadiscoidal character. दूसरा, human placenta is chorionic. That means outer membrane will form the fetus. Outer membrane covered by chorion. Next, hemochorial. That means हेमो, ये मदर से आ जाता है, कोरियल जो फीटस से आ जाता है। डेट मीन्स ह्यूमन प्लेसेंटा इज हेमोकोरियल।
नाउ deciduate. Deciduate मीन्स ये कंप्लीटली कवर करता है इस प्लेसेंटा को फ्रॉम ऑल द साइड्स, और जब पार्चुरेशन होती है दिस होल गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, from the body of female during parturition. This is known as deciduate placenta. Metadiscoidal, completely covered by endometrium, chorionic, outer membrane is chorion, and fetus chorion से बनता है आगे, hemochorial, ये जो बाहर वाला होता है, it is made up of, placenta is made up of mother as well as fetus, और deciduate completely remove होता है. Now हमारे पास ये जो लेयर्स ऑफ प्लेसेंटा है, वो लेयर्स जो प्लेसेंटा को बनाते हैं उनमें क्या क्या है, हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है जिसको हम कहते हैं यॉर्क सैक प्लेसेंटा. यॉर्क सैक प्लेसेंटा में क्या होता है, एक तो प्लेसेंटा बनाता है यॉर्क और कोरियन. दैट मीन्स कोरियन, कोरियन तो हर जगह है, लेकिन यहां पर यॉर्क सैक प्लेसेंटा उसको कहते हैं जहां पर the placenta formation includes yolk sac also. One, एक इनमें होता है marsupials like कंगारू. दूसरा है हमारे पास जिसको हम कहते हैं एलेंटॉइक प्लेसेंटा. एलेंटॉइक प्लेसेंटा हम उसको कहते हैं जिसमें कोरियन तो है लेकिन उसके साथ एलेंटॉइस है. दैट मीन्स एलेंटॉइस एंड कोरियन, एलेंटॉइक. तीसरा है कोरियनिक प्लेसेंटा लाइक इन प्राइमेट्स, ह्यूमंस, मंकीज, चिंपैंजी एटसेट्रा, इनमें खाली कोरियन बनाता है. अब क्या है, तीन लेयर्स, यॉर्क सैक जिसमें यॉर्क बनाएगा, एलेंटॉइस जिसमें एलेंटॉइस, और कोरियनिक जिसमें कोरियन. नाउ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. ये जो फीटस हमारे पास है, ये फीटस, दिस फीटस remains in mother for around 9 months. During these 9 months, it is covered completely by different membranes. कौन कौन सा मेम्ब्रेन है, एक ये है पहला, ये फीटस है, यहां से एक है जिसको हम कहेंगे यॉर्क सैक. ये यॉर्क सैक, यॉर्क सैक ह्यूमन ओवा जो होता है, यॉर्क बहुत ही कम होता है बिकॉज एज कंपेयर टू फिशेस, एज कंपेयर टू amphibians, as compared to particularly in case of birds, because they produce the eggs outside oviparous. यॉर्क सैक जो है ये मेम्ब्रेन है, इट एक्ट्स एज ए गट. इसकी फंक्शन क्या, इट एक्ट्स ए गट. दैट मीन्स इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड. यॉर्क सैक. दूसरा दूसरा है हमारे पास जिसको हम कहेंगे एलेंटॉइस. एलेंटॉइस इज द अनदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. ये एलेंटॉइस जो है, ये एलेंटॉइस, it acts as kidney. Allantois acts as kidney. That means the nitrogenous wastes produced by the fetus, they are stored in allantois and then removed with the help of mother's blood. दो तीसरा, इसके बाहर ये कवर होता है जिसको हम एमनियन कहते हैं. एमनियन के पास होता है एमनियोटिक फ्लूइड. दिस एमनियोटिक फ्लूइड, ये है एमनियन. दिस एमनियोटिक फ्लूइड, it acts as shock absorber. If the pressure exerts on the mother's abdomen, it is the membrane, it is the fluid which gives protection. And this fluid, it also contains fetal cells. What are the fetal cells? Fetal cells means cells of fetus. अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं क्या, जिसको हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, amniocentesis is the technique in which fluid is collected from the amnion and is being analyzed in the lab to check is there any disease, embryonal disease, genetic disease, all the organ physically comfortable, physically well, genetically complete, etc. जिसको हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, जिसको आफ्टर 3 months किया जाता है. This is the amnion. Now,
बाहर से जो ये है जिसको हम कहते हैं कोरियन, कोरियन इज द आउटर मेम्ब्रेन. Main function of the chorion is that it produces these villi, chorionic villi, chorionic villi, and also it acts as a lung. That means chorion helps in the process of respiration. This chorion helps in the process of respiration. Now, these are the four membranes: chorion, outer amnion, उसके बाद और yolk sac and allantois, known as extra embryonic membranes. Or but during parturition, all the membranes are lost, and this is the umbilical cord, which is cut off after parturition, and the fetus is released. These this all becomes later on waste, thrown out, and this is the fetus. This was something about the placenta, importance of placenta, hormones of placenta, different characters of human placenta, and the fetal membranes.